Good morning, everyone. So, welcome you all in this platform of StudyIQ PC channel. Pranam Akshay. Good morning, Rajendra. Good morning, Sangeeta. Good morning, all of you. I hope everything is fine. Audio and slides are visible. Audio is perfectly fine and slide is perfectly visible. So today is 15th of November. We'll discuss national, international news as it is Saturday. Thank you for the confirmation. Okay, let's start. Only few news are there. Digital Personal Data Protection Act. We'll discuss about it. And GI tag, any Kuki tribes category, and wholesale price index. These are the some of national international news for today's discussion, because as you know in Saturday very less, and the whole newspaper is covered with the election results of Bihar. Anyway, so let's start. Digital Personal Data Protection Act. Central government notifies key parts of Digital Personal Data Protection Act. The government notifies major parts of the Digital Personal Data Protection Act 2023. The Union government has formally brought into force large parts of the Digital Personal Data Protection Act 2023. Protect digital personal data of Indian citizens, regulate how it is collected, stored and processed. Protect digital personal data. Let me give you some idea. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଧାର କୁ implement କରାଗଲା, the case was in Supreme Court, or a PIL was filed that Aadhaar is something like government is collecting all those data sources, and this can be used for, or this can be misused in fact, and it something breaches the privacy of individuals. तो ये PIL को फाइल करा जाए, PIL आपनकर फाइल करा जाइतला सुप्रीम कोर्ट रे. So with this word, whoever would be the agency, ठीक है, government agency जे collect करूची data, it's the responsibility of that agency की to protect those privacy of the data. जेमती से leakage ना हो, misuse ना हो. So digital personal data, whatever iris scanning हो, thumb impression हो of Indian citizens, सेटा को केमती protect करा जिबो as a personal data हिसाब रे collected, stored and processed. So 2017 रे गोटे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आसिला. The notification moves India closer to the compliance with the 2017 Supreme Court judgment, that is case Puttaswamy versus Union of India. ये Puttaswamy versus Union of India रे केस रे कोन आसिला देखंतु. That verdict declared a right to privacy as a fundamental right. Right to privacy as a fundamental right that comes under the Article 21. Okay. So privacy जेहेतु गोटे fundamental right, तेणु जेकोसी data which is associated with the person, suppose digital data, right, information about the iris scanning, thumb impression, every detail of an individual is again part of this fundamental right. So that can be protected through any such law. So firms must secure personal data. जेकोसी आपण suppose गोटे SIM card किनिबा को जाउछन, any such things you are claiming or purchase करूछन, so data आपनकर जाउछि आधार OTP रे verification होछि. Secure personal data, prevent data breaches, take users consent before processing the data. Data process kariba purbaru you must take the consent of the user. Allow users to correct, delete and access their data. Okay. Penalties for non-compliance can be very high, up to 250 crore per breach. तो ये जो instruction has been given to the different farms companies जो माने कि इंडिविजुअल पर्सनल डेटा सहित से माने लिंक करूचंदी. तेणु एक तो सिक्योर करेबे पर्सनल डेटा को, प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस and take user consent before processing data, and allows users to correct, delete and access their data.
Exemptions for the state. The act gives wide exemptions to the state. That means state it include 9. Okay, government agencies. Government agencies भी include 9. These agencies may process data without the consent for reasons such as national security, law enforcement. ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ କନସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ସେମାନେ ଡେଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ. Activist concern, weakening of RT Act. The DPDP Act has amended Section 8(1)(j) of the RT Act. बर्तमान ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आमर जो एग्जिस्टिंग RTI अच्छी RTI Act that is right to information that every individual has a right to know about the government functioning, let's say जोटा कि Article 19 itself is a हमें कहूँ fundamental right to speech and right to or freedom of speech and expression under रही right to information आसुची. हमें just yesterday or day before yesterday हमें डिस्कस करूँ 12 तारीख दिन जो दिन आपंकर एनिवर्सरी थी कार RTI लॉ रो तेणु RTI लॉ कहूँ एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू नो गवर्नमेंट को भाई भाव में फंक्शन करुँच गवर्नमेंट रो कौन कौन ऑपरेशंस चली ऑल्दो एब्सोल्यूट नुहे कारण नेशनल सिक्योरिटी को लेकिन हो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट नहीं हो गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू गिव एवरी डेटा बट येस as a common man, common citizen, तेणु एमानक right to know रो गोटे fundamental right. Government bodies no longer have to disclose personal information of officials even when the public interest is larger. So ई law को नहीं कि अपन देखिबे वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर क्वेश्चन रेज करा जाइतला and a petition was filed in the Supreme Court and Supreme Court माने एक तो RTI रे दिल्ली यूनिवर्सिटी रो मागा जाइतिला एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी डिनाइड पुणी थरा सुप्रीम कोर्ट से माने गला एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस जजमेंट ओके कि राइट टू प्राइवेसी एटा इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड. सो ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट से इट इरोड्स RTI एंड रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी. यदि सब इनफॉरमेशन को ऑन द नेम ऑफ पर्सनल डेटा आपण प्रोटेक्ट करिवे आकु रिवील करिवे नहीं दैट मीन्स इट विल इरोड द trust of the public, it will erode the accountability and answerability as well. So this is what actually the critics are saying with respect to this digital personal data protection. Significance कौन देखो एक तो जो digital data protection law होची this is such kind of first such comprehensive law aligns India with the global norms such as GDPR but with more exemptions for the state. सो इंडिविजुअल पाइन तो एटा अच्छी बट स्टेट पाइन स्टेट को हमें एग्जेम्प्ट कर दूचे. दिस इज व्हाट हैपनिंग. डिबेट कंटिन्यूज इन द बैलेंस बिटवीन द प्राइवेसी राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ कंप्लायंस. नेक्स्ट देखिबा GI टैग. गुजरात's अंबाजी मार्बल गेट्स GI टैग फॉर इट्स क्वालिटी. अंबाजी मार्बल सोर्स फ्रॉम द अंबाजी इन Banaskantha district, Gujarat, has received the Geographical Indication Tag or what we call the GI tag. It is granted by the Geographical Indication Registry, Ministry of Commerce and Industry. Who received the GI certification? Ambaji Marbles Quarry and Factory Association Banaskantha. They received this GI tag certification. Why is Ambaji Marble special? It's renowned for pure white color. It's high in shining, exceptional durability, and high calcium content. These are some of the unique features of this Ambaji marble special, and they are renowned for their special features. What is GI tag? The GI tag is a sign used in products that have specific geographical origin. Specific geographical origin. सी जगह ही इटा ओरिजिनालिटी आपनकर मिलिबे. एनीवन आपन जदि कॉपी भी करिवे बट दे विल नॉट GI टैग. ओके सो GI टैग शोज
the authentication of that product, authenticity, qualities, reputation, characteristics essentially attributable to that location. And this is part of this what intellectual property rights. ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଯେମିତି ଆମେ ରସଗୁଲା କହୁଛେ, although both the states fought, Bengal and Odisha, and finally GI tag was given to both the state. କାରଣ ଅରିଜିନାଲିଟିର ଗୋଟେ ୟୁନିକନେସ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି, that cannot be copied by anyone. So to protect that originality, speciality and unique feature, ଆମେ GI tag ର use କରୁଛେ, and that comes under the intellectual property rights. Legal basis କ'ଣ ଦେଖ, governed by the Geographical Indication of Goods, that is Registration and Protection Act 1999, came into force in 2003. 2003 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ introduce କରାଗଲା. Administered by GI Registry Chennai under the Office of Controller General of Patents, Design and Trademark, that is under the Ministry of Commerce and Industry, based on the WTO TRIPS agreement. TRIPS means trade related intellectual property rights जोटा आपनकर अछि. Okay, GI tag हेले कोन होबो ना, it enhances the marketability. Suppose marble from the Banaskantha, marble from the Rajasthan, so obviously Banaskantha will be given preference, and that increases the credibility, okay, and the brand value as well. Helps to protect traditional knowledge. Traditional knowledge जेमती आपण देखिबे, simple there are आमे food items गुड़ा को भी दूचे, ता सहित आमे let's say टेक्सटाइल को भी दूचे. ये सब होची ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कम्युनिटी राइट्स. बूस्ट एक्सपोर्ट, जदि ऑथेंटिसिटी बढ़िबो, क्रेडिबिलिटी बढ़िबो, दैट विल एनहांस द एक्सपोर्ट. जदि एक्सपोर्ट बढ़िबो, लाइवलीहुड को बेटर करि परिबो बाय गिविंग मोर इनकम. एंश्योर कंज्यूमर्स गेट ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स. ओके, आ गोटे जिनस मु कहि रखे, जीआई टैग आपनकर 10 इयर्स पई दिया जाए, एंड देन again it is reviewed. Okay, review पर पूर्ण तरह जदि they feel it has maintained the credibility, तो सेटा को पूर्ण तरह दिया जाए, otherwise not. Next, any cookie tribes category. As we know that northeastern region is kind of आपण कहि परिबे the vulnerability in terms of the boundary. आपको बाउंड्री फजिलिटी वल्नरेबिलिटी देखा मिले कहीं ना पोरस बॉर्डर आपको देखा मिले. सो दैट वाज द रीजन, इफ यू सी मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द डेमोग्राफिक प्रोफाइल हैज बीन चेंज्ड. द डेमोग्राफिक प्रोफाइल हैज बीन चेंज्ड. दैट मीन्स मोर ऑफ दोज नेबरिंग स्टेट्स पीपल जमती बांग्लादेश रो माइग्रेट करूचंदी, म्यांमार रो माइग्रेट करूचंदी. Why they are migrating? Because these states or countries are not stable. Political turmoils are going on. केतବେଳେ military coup चलीची, केतବେଳେ civil war चलीची, केतବେଳେ civil unrest चलीची. So similar kind of situation in the Bangladesh. So those people are coming or entering in the northeast to have a stable citizenship, stable livelihood and stable government. So Thado MP Manipur, the apex body of the Thado community, has asked the BJP to correct what it calls a historic error committed by the India government in 2003 when it introduced any Kuki tribes category in Manipur's list of scheduled tribes. तो ये कॉन्टेक्स्ट थिला कि थाडू एमपी मणिपुर जे सेटिकार कम्युनिटी अछंदी से माने बीजेपी को रिक्वेस्ट करी टू चेंज दिस, आई मीन द स्टेटस एनी कुकी ट्राइब्स. ये एनी कुकी ट्राइब्स कौन एक्चुअली देखिबा, जो थाडू कम्युनिटी या एमपी मणिपुर जे अछंदी, दे आर्ग्यू दैट एनी कुकी ट्राइब्स कैटेगरी इज रिडंडेंट एंड प्रॉब्लमेटिक. कहीं ना जो फॉरेनर्स माने आसुचंदी को माने स्पेसिफिकली म्यांमार रो फॉरेनर्स माने आसुचंदी, कारण जेहेतु एठी गोटे पोरुस बॉर्डर अछि, जे पोरुस बॉर्डर थ्रू रे से माने एंटर करूचंदी मणिपुर रे एवं सेठी से माने एसटी स्टेटस क्लेम करूचंदी, राइट. तेणु आपण तो लिखिचंदी एनी कुकी ट्राइब्स, तो एनी कुकी ट्राइब्स माने दे सिंपली क्लेमिंग
they are from the Kuki tribe and they apply for that status. Once they get the status, okay, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ସେ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା it demands legislative action in parliament to remove any Kuki tribes from Manipur's ST list. Team asserts the distinct ethnic identity of the Thadu, stating Thadu is not Kuki, nor under Kuki, nor part of Kuki. Okay, so any Kuki tribes रो कोनो से significance नहीं. Plus ये जो foreigner माने entry करूचंदी से बांग्लादेशीज होंतु other states रे मणिपुर रे म्यांमार होंतु they are simply एक तो demographic profile change करूचंदी. They are resource जो constant resource अच्छी तापर further stress करूचंदी. And there could be ethnic conflict. There could be ethnic conflict. आपनकर श्रीलंकन जो सिविल वार आपण देखुचंदी 1990s रे से सिविल वन कहा भीतर हेतिला तमिल एंड Sinhalese were the majority people in that area and Tamilians were the minority and Tamilians आपण देखिबे तांकर ethnic similarity अछि कहा सहित आपनकर तमिलनाडु स्टेट सहित हमर तेणु Tamilian सिटी minority and could be a possibility Tamilian इंडिया रो ही जाई कि सिटी अछन तेणु that was a civil war. Even civil war एमती नुहे कि आज सरी जाई tension is always there but still some kind of political stability we have seen after the financial crisis. तो similar kind of civil war आपनकर कोठी भी हेई पारे जदि एठी भी आपण देखिबे इट्स काइंड ऑफ एमानकर मेजॉरिटी बढ़ी गला कार एनी कुकी ट्राइब्स करो there could be a possibility जो माने ओरिजिनल ट्राइब अछंदी they can start a kind of war against them. Okay, civil war kind of condition. So Thodo representatives be included in any future peace dialogue and negotiation regarding the Manipur conflict. Then Manipur ro jodi conflict hela tebe Thado community must be part of that. The Thado community seeks assert an independent identity separating itself from the wider Kuki umbrella. Okay, this is significant because ST classification affects political representation. कारण ST category ST community आपनकर ST जदि स्टेटस मिलेला तबे एक तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपन को मिल जिवो लैंड राइट्स आपन को मिल जिवो एंड एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स भी आपन को मिल जिवो. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेटस और फैसिलिटीज दे आर एंजॉयिंग वंस दे गेट द स्टेटस ऑफ ST. So any Kuki tribe category controversy, any Kuki tribes category was introduced in 2003 include smaller Kuki subtribes. 2003 रे इटा को इंट्रोड्यूस करा जायतिला. It claims broad category dilutes tribal identity and makes the ST list vulnerable to misuse by the cross-border migrants. तो जे any Kuki जे कोनोसी community निजको Kuki कहिकी से माने tribal status नौचन. This ties into larger concern about the immigration, demographic change, ongoing Manipur ethnic tension between the Meitei and Kuki. ये जिन सब हमें अगरू देखिए. So it could be a kind of civil unrest or civil war type of situation. Next देखिए WPI inflation falls to 20-month low in October. Here just पूर्व हमें CPI देखिए now it's the WPI. Wholesale price index fell a 27-month low of 1.21% in October 2025, indicating overall deflation in wholesale prices. October 2025 देखंतु -1.21, September 0.13, October 24 रे 2.75. So now it's in a negative zone. Negative zone means it's kind of अपन कहि परिबे जो आमे कहू छै disinflation, right? Disinflation, price inflation the grow करूची but in a negative way, a negative number. Reasons for fall: sharp deflation in food items like pulses and vegetables. यारो prices काफी कमी छै. Fuel prices have been reduced. Decline in the prices of the manufacturing goods as well. Significance of negative WPI. A negative WPI indicates broad-based deflation at wholesale level. Okay, broad-based deflation. Benefits
obviously industries को input cost reduce होबो, government procurement आपनकर कोन होबो बढ़िबो, but may signal weak demand condition and pressure on the producer margin. Producer of profitability कमिबो, this is one of the concern, profitability. and जेहेतु inflation कमिबो तो ऑलरेडी आपनकर जो वीक डिमांड कंडीशन अछि सी को भली भाबरे ताको मैनेज करिवो, दैट इज जदी डिमांड बढ़िला देन इट विल बी डेफिनेटली हेल्प. फूड डिप्लीशन ए मिक्स्ड आउटकम, इजी प्रेशर्स ऑन द हाउस होल्ड बजेट, तो लोक मान को पाखरे परचेजिंग कैपेसिटी बढ़िवो, परचेजिंग पावर बढ़िवो एवं सीपीआई इन्फ्लेशन को भी मॉडरेट करि परिवो. नेगेटिव जदी देखिबे अफेक्ट्स फार्मर्स इनकम स्पेशली फॉर द पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. तेणु पल्सेस एंड वेजिटेबल्स प्राइस यदि ड्रॉप है फार्मर विल नॉट गेट ए गुड प्राइस. तेणु सी भी गोटे फार्मर मान इनकम को लेकिन कंसर्न हो पारे. कुड इंक्रीज डिमांड फॉर एमएसपी सपोर्ट एंड प्रोक्योरमेंट. ओके, तेणु से कही पारती कि मार्केट रे हमको ठीक प्राइस मिलूनी, तेणु आम प्रोडक्ट को एमएसपी सपोर्ट दिया जाऊ एंड गवर्नमेंट प्रोक्योर करा जाऊ. फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, डिक्लाइनिंग फ्यूल प्राइसेस help cool transport cost, manufacturing input cost. तेणु prices of the manufacturing products गुड़िक भी कमी पार चांसेस अच्छी, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यदि कमिबो इन्फ्लेशन आउरी फर्दर ईज डाउन हबो. लोअर प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स में रिफ्लेक्ट वीक डिमांड, जेहेतु डिमांड कम अच्छी तेणु सी गोटे फैक्टर हो पारे. एक्सेस कैपेसिटी अधिक सप्लाई होची, ओके, डिमांड कम होची, ये होची गोटे फैक्टर जोथि पई प्राइस starts declining. Global commodity trends, international market रे भी सस्ता थई पारे. WPI कोन देखो, WPI measures the average change in the prices of goods at the wholesale level, और जोटा का हमें कुछ प्रोड्यूसर लेवल रे और जोटा का हमें कुछ बल्क प्राइस. It does not include services, it only includes goods. कारण सर्विसेस रे कोनोसी होलसेल प्राइस किछि नाही, जहाँ सर्विसेस रे प्राइस होची in terms of CPI. एटाकू डेटा किए पब्लिश करुचे मंथली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बीसीआर देखो 11-12 कंपोनेंट्स कौन, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.62%, फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सबुठु अधिक कोटा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 64.23%. ओके, एंड पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी यार परसेंटेज होची 13.15. इंडस्ट्री गुड्स होची फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, केमिकल, सीमेंट, मेटल, मशीनरी एक्सेट्रा. एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एटी हाईएस्ट वेटेज अच्छी. जदि आप सीपीआई देखिए आपंकर फूड फ्यूल जोटा अच्छी सी तार सबुठ हाईएस्ट परसेंटेज, बट डब्ल्यूपीआई हाईएस्ट परसेंटेज होची मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. जदि गोटे कंपैरिजन देखिए ये हूँ होलसेल, ये हूँ कंज्यूमर लेवल रे, ये हूँ प्रोड्यूसर लेवल रे, ये हूँ कंज्यूमर लेवल रे, रिटेल लेवल रे. दैट मीन्स गोटे कंज्यूमर केते प्राइस रे किणुची प्रोडक्ट. ये होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल गुड्स को कवर करूची, ये बोथ गुड्स एंड सर्विसेस. ये डीपीआईआईटी को कवर ताको पब्लिश करूची इंडस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रेड, ये हूँ एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. यार भी बेस ईयर 11-12, यार भी बेस ईयर 12. वेट ऑफ द फूड एठी लोअर कारण होलसेल एटा एठी मैन्युफैक्चरिंग को अधिक प्रायोरिटी दिया जाउची, एठी वेट ऑफ द फूड होची हायर. आरबीआई एटा को यूज करूची कि एटा 2014 पूर्वरु यूज करा जाउथला, वर्तमान हमें सीपीआई को यूज करूचे फॉर द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. लिमिटेशन ऑफ डब्ल्यूपीआई, yes, services are not included, does not reflect cost of living. Cost of living की रिफ्लेक्ट करूचे सीपीआई. सीपीआई आपण देखिबे सीपीआई बेसिस रे ही हमें कोन करूचे, हमें दउचे डियरनेस अलाउंसेस. ओके, ओवरवेट्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रो अधिक वेटेज एठी रहउची. रिटेल मार्केट डायनामिक्स नॉट कैप्चर्ड, दैट मींस कंज्यूमर मार्केट रो डायनामिज्म एठी रिफ्लेक्ट हो नाही, सेटा को सीपीआई डील करूची. एमसीक्यूज देखिबा, which of the following is not a feature of the Digital Personal Data Protection Act 2023? It mandates consent for processing of personal data. Okay. GI tag. True. GI is a form of industrial design protection. GI granted under the Geographical Indication of Goods Registration Protection Act.
Third, the recent controversy any Kuki tribes category relates to primarily, that is misuse of AKT tag by foreigners from Myanmar. WPA की produce करुची yes की publish करुची Office of Economic Advisor. ये दुईटी आपनकर मेन्स रे क्वेश्चन अछि. ओके, बाकी जो माने चाहूचंदी हमरो आज होची लास्ट डे सेल रो 15 तारीख. जो माने चाहूचंदी जेन लाइफ को कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं पारिबे. आज होची लास्ट डेट. ओके, ये होची हिंदी एंड इंग्लिश बैच. परिपूर्णा होची इंग्लिश एंड ओडिया बैच. बाकी कॉम्बो क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज में नहीं पारिबे. पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो. थैंक यू.